व्हाट्सअप पीपल, व्हाट्सअप 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 व्हाट्सअप, क्या हाल चाल सब लोगों के। आप सबका स्वागत है। एक सेकंड खाली मैं लिंक शेयर कर दूं हर जगह पे। मैं एक्चुअली हमारे इस आंसर राइटिंग सेशन का एडमिट कार्ड लाना भूल गया, यानी कि मेरा आईपैड ही गलती से नीचे कार में रह गया था, तो मैं फट से भाग के नीचे गया, गाड़ी से वापस जल्दी लेके आया और तुम्हारे पास भाग भाग के दौड़ दौड़ के जैसे तैसे पहुंचा हूं। बताओ मेरे शेरो, जस्ट अ मिनट, आई जस्ट शेयर अराउंड दिस एवरीवेयर। तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आई टेल यू व्हाट वी गोना डू। आई नो यू हैव मेनी क्वेश्चंस अराउंड, आई नो बहुत सारे सपनों के साथ आए हो तुम यहाँ पर। आई एम गोना मेक देम हैपन ऑल। धन्यवाद। ये इसी बस बस बस, ये चाहिए, ये अभी हो गया है, इसको बस तो मधु को रख दो। अभी उधर रख दो। सेंड। तो मैंने आप लोग के ग्रुप्स पे आपका लिंक शेयर कर दिया है अभी ऑल टुगेदर। थैंक यू सो मच रोहित मेरे भाई। सर आज ईसीआई पे जय जय, शाबाश शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। इतने सपने देख कर आया मैं और आपने ऐसी पार्टी करी, दम तो है भाई तुम। डन, दिस वाज ऑल व्हाट आई हैड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आप सब लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। ऑफ कोर्स यू ऑल नो दैट व्हाट इज द प्लान। ठीक है, मैं सब बता रहा हूं। हर्ष काम डाउन, काम डाउन। ठीक है, अब 2 मिनट, आपकी सारी रिक्वेस्ट, आप सब कुछ अपन बाद में फिर से बात कर लेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम टू इट। अपने को 2.25 पेपर स्टार्ट करना है नाउ। व्हाई आई हैव केप्ट दिस सीरीज एंड व्हाई यू नो प्रोबेबली दिस एंटायर फसाड व्हिच आई हैव क्रिएटेड। फर्स्टली, हम डिसिप्लिन वे में कैसे एक पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे हमें टाइम मैनेजमेंट देखना है, 1। सेकंड, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, 2। क्वेश्चन पढ़ के एकदम पैनिक नहीं करना है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो शिट, इस टाइम पे अपने को क्या करना है, दिस इज द नेक्स्ट अप्रोच। आंसर्स कैसे लिखने हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे आंसर्स मैं लिखूंगा आपके साथ। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ के इसका एक पॉसिबल आंसर जल्दी से समझेंगे और फट से उस आंसर को लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रैशनली सोचने से लेकर लिखने तक सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। यानी कि मान लो कि आज तुम 2 बजे सेंटर में पहुंचे हो, 2:15 बजे तुम पेपर लिखना स्टार्ट करते हो और 5:15 बजे तक तुम्हारा पेपर चलता, तो उन 3 घंटों में द डूज द डोंट्स, हाउ टू अप्रोच द पेपर एंड लेट्स से कि हम 6 महीने पहले बैठे हुए हैं और हम 6 महीने पहले आज इस पेपर के सामने बैठे हैं और बस मान लो कि प्रभु हमारे साथ, हम इस पूरे पेपर को साथ में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, किस तरीके से सोचना समझना है, मैं हर चीज आपको बताऊंगा। आज वाला सेशन हो सकता है कि 15-20 मिनट ज्यादा चले। ठीक है, आज वाला सेशन हो सकता है 15-20 मिनट ज्यादा चले, पर इसके पीछे 15-20 मिनट ज्यादा चलने का रीजन क्या है मेरे शेरों? इसके पीछे चलने का रीजन है 1, आज मैं आपको पहले थोड़ी सी अप्रोच समझाऊंगा। ऑब्वियसली JIGL का जब हम सेकंड पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तब मैं बैठ के आपको अप्रोच नहीं समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा, सेम जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपकी स्क्रीन पे रखा है एज इट इज, मैंने आप लोगों के लिए, मेरी रीडिंग के लिए जल्दी से साथ में एक पेपर मेरे पास भी रखा हुआ है ना। सो मैंने आप लोगों के लिए इस पेपर को पूरा एनालाइज भी किया है, सब कुछ किया है। थैंक यू सो मच। मेरी तारीफ बस तुम्हारा प्यार बहुत है और वीडियो को लाइक कर देना, वो भी बहुत हो गया। तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो, प्रभु करे कि तुम्हें मजा आ जाए सेशन के अंदर और तुम्हारे मन में जितने भी एक पेपर से लेकर डाउट्स होते हैं, आई विल मेक श्योर वी सॉल्व देम ऑल। ठीक है सर, हम कौन सा आइटम सॉल्व कर रहे हैं? हम आज कर रहे हैं June 25। 3 दिन बाद हम करेंगे आप, मतलब 4 दिन बाद हम करेंगे आपका December 24 और उसके 3-4 दिन बाद हम करेंगे June 24। यानी कि टेक्निकली मैं अभी तक के जो रीसेंट 1.5 साल के अंदर कोई भी क्वेश्चन आया वो सारे के सारे ही एड्रेस कर दूंगा। ठीक है, सो आई रियली होप दैट यू एंजॉय दिस सेशन टू द
मैक्सिमम कोर व्हाट यू रियली वांट, और प्रभु आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। ठीक है, अब देखो 2 बजे तुम्हारे हाथ में पेपर आ जाएगा। ठीक है, 2 बजे तुम्हारे हाथ में पेपर आ जाएगा। मैं जब ये पेपर लिख रहा हूँ, मैं आपके कन्वीनियंस के लिए स्क्रीन नहीं कर दूंगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। वन टू थ्री। हाँ, तुम्हारी यहाँ जायज इच्छाएं पूरी होगी, गलत गलत इच्छाएं भगवान पूरी करता भी नहीं है। जब मैंने स्क्रीन सेटअप किया था तो आपको आवाज आ रही थी दोस्तों? एक सेकेंड, अब देखना, आई हैव चेंज द सेटअप। हेलो 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 हेलो। क्या अब आपको आवाज आ रही है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ऐड का हम अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी आप बस फोकस करिए इस चीज पर। आई हैव 3 minutes more to talk more and then we have to start the paper. राइट, क्या अब आपको ऐसे स्क्रीन रखने पे आवाज आ रही है और अब ऐसे में भी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। परफेक्ट, सो द टेस्टिंग लुक्स फाइन। मैंने आप लोग के लिए एक चैनलाइज माइक स्टार्ट कर दिया है। डन, ओके। अच्छा, आप सब लोगों के पास अपनी वो है आंसर राइटिंग बुक एंड पेन रेडी? कौन से पेन से लिखोगे जल्दी बताओ, कौन से पेन से लिखोगे, कौन से पेन से लिखोगे? हाँ नहीं, वो मैं माइक अपने पास रखूंगा जब मैं स्क्रीन बड़ी करूंगा, डोंट वरी। बहुत ही बढ़िया, ब्लू बॉल पेन सबसे बढ़िया, इससे ज्यादा कुछ अच्छा है ही नहीं। ओके, सो आई हैव माय आंसर राइटिंग पैड, वन लास्ट शॉट विद सीसी, द आंसर बुक। डन डन, सो वी हैव आवर आंसर राइटिंग बिल्कुल आईसीएसआई पैटर्न स्टाइल में। अगर किसी ने पहले लिखा है तो आपको पता होगा, हमने वहां से थोड़ा सा चुराया है और उसी अप्रोच में हम अपने आंसर लिखने वाले हैं। राइट, चलिए। अच्छा, ना लेट मी टेल यू समथिंग वेरी गुड अबाउट दीज पेपर्स। मैंने सारे के सारे प्रीवियस पेपर्स एनालाइज कर लिए हैं एंड देयर आर समथिंग विच यू शुड बी अवेयर, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ ठीक है, पर मतलब आई वुड सजेस्ट ब्लू, बस ऐसा मेरा चॉइस है। लेट मी टेल यू समथिंग गुड अबाउट इट। आपको पहले आपके पेपर के पैटर्न को समझना होगा, आपके पेपर के पैटर्न को समझना। अब बस मेरे पे फोकस करना आराम से, बाकी सब छोड़ दो। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड योर पेपर पैटर्न। जेजीएल के अंदर आपको क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 6, 6 क्वेश्चंस एड्रेस करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 आपका 20 मार्क का होगा। क्वेश्चन 1 आपका कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का होगा। सर याद रखना, हर पेपर में जो आपका जेएचएल का क्वेश्चन 1 होता है, जो 20 मार्क्स का होता है, वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ही होगा। यानी कि इसमें आपको पैसेज सॉल्व करना होगा। एक बहुत ही बड़ा सा पैसेज होगा, उसके अंदर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर ऐसा क्वेश्चन होगा।
मतलब कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा तकरीबन इसमें आपको 9 क्वेश्चंस के आसपास सॉल्व करने पड़ सकते हैं, एक आध क्वेश्चन प्लस माइनस इतना एक यूजुअल टर्म पर क्वेश्चन आएगा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। ये 20 नंबर के लिए है, ठीक है। सो जब आप ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन देखोगे तो इसको अप्रोच कैसे किया जाता है, कभी भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे कि इसमें हमें क्या क्या चीजें ढूंढनी है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन हो। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे तो मैं बैठ के वापस से पूरा पूरा पैसेज क्यों ढूंढूंगा। सो फर्स्ट वील सी द क्वेश्चंस, क्वेश्चन से जाएंगे हम पैसेज पे और वहां से अपने अपने आंसर्स लेके आएंगे। जितने प्रीवियस ईयर मैंने सेगमेंट ऑफ क्वेश्चंस देखे हैं इसमें अमूमन तौर पे पैसेज ऊपर टाइम वेस्ट करने के लिए होता है, नीचे क्वेश्चन काफी हद तक डायरेक्ट ही होते हैं। सो यू विल फाइंड लेसर चांसेस कि आपको इसके अंदर पैसेज बेस में ऊपर पैसेज को बहुत ज्यादा डिटेल में रीड करना पड़े। नाउ सर इस क्वेश्चन 1 पैसेज में हाईएस्ट चांसेस कौन से चैप्टर्स के आने के होंगे, सोर्सेज ऑफ लॉ से पैसेज आना बहुत रेयर चांसेस है। टू माय नॉलेज मुझे से लगता है कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसके ही अगेंस्ट पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने का चांस है, यहां से आपको 10 नंबर देखने को मिल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, इसके बाद एडमिन लॉ इज अ वेरी गुड चैप्टर टू बी आस्क्ड। इसमें से जुडिशियल रिव्यू निकाल के फेंक देंगे अचानक से, डिफरेंट स्टेजेस का नेचुरल जस्टिस का क्वेश्चन बन जाएगा। तो एडमिन लॉ पैसेज बनाने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दे हैव हिट इट फ्रॉम लॉ ऑफ टॉर्ट्स वंस, सो डेफिनेटली टॉर्ट्स एक साइड हो सकती है जिसको आप कंसिडर करें फॉर योर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट मुझे लगता है सीपीसी, बीएनएस and BNSS, arbitration is the least possible मतलब ये सिर्फ मैंने for the sake of safer side play किया है। एंड BSA, ये चैप्टर्स हैं जिससे मुझे लगता है आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि ये चैप्टर इस बार 10 से 20 मार्क्स के बीच में रिवॉल्व कर सकते हैं, ठीक है डन। सो 10 से 20 नंबर के लिए आप इन चैप्टर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, विद द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज ऑन दिस साइड, अ बिट लेसर ऑन द अदर साइड। मैंने इनको इसी तरीके से आपके लिए लिखा है। तो सर टोटल कितने 8 चैप्टर, सर 18 में से 8 चैप्टर सेलेक्ट करवाएं जिसमें से 10 से 20 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो दीज आर दी योर टिपिकल कैटेगरी ए चैप्टर्स, इनसे बाहर इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। 1, ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन 1, कीप इट असाइड। नाउ यू गोइंग टू क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, अमूमन तौर पे आपको इसके अंदर बीएनएस, बीएसए, लिमिटेशन एक्ट इस तरफ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो काफी हद तक डायरेक्ट होंगे, ठीक है, जो काफी हद तक डायरेक्ट होंगे। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 भी इसका सिस्टर कंसर्न है, काफी डायरेक्ट क्वेश्चन ही रहते हैं। आजकल सिर्फ पूछने में अप्रोच चेंज कर दी है लोगों ने, अप्रोच का तरीका ऐसा रख दिया कि दे टेक्निकली प्ले अराउंड विथ देयर वाज दिस पर्सन जिसने सामने वाले को ऐसा इंट्रोड्यूस किया कि भैया आपने ना, मैं तो इतना इतना क्वालिफाइड हूं और आप मुझे ये चीज भेज दो, मतलब दिखेगा केस बेस्ड क्वेश्चन बट देन, ठीक है, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। ये क्वेश्चन 3 बिल्कुल केस बेस्ड जैसा दिखेगा पर होता डायरेक्ट ही है। नाउ यू एंटर क्वेश्चन 4। अब आप नोटिस करके देखना, जो क्वेश्चन 4 होगा ना और क्वेश्चन 6 होगा उसमें हमेशा आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 6 में आपको हमेशा ऑप्शन मिलेंगे। सो जब आपकी स्टार्टिंग के 15 मिनट थे उसमें बहुत अच्छा दिमाग लगा लेना कि आपको क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन 4A अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन 6 से अटेम्प्ट करना है। ऑलवेज रिमेंबर, क्वेश्चन 4 का 1, 2 अटेम्प्ट करूंगा, क्वेश्चन 4A का 3, 4 अटेम्प्ट करना, लपड़ पड़ेगी। जो क्वेश्चन चूज किया वही पूरा का पूरा सेगमेंट सॉल्व करना होगा। अगर क्वेश्चन 4 सेलेक्ट किया है तो ABC उसका, अगर क्वेश्चन 4A सेलेक्ट किया है तो ABC उसका, ठीक है ना, मिक्स नहीं करना। क्वेश्चन 5 में कोई ऑप्शन नहीं होगा एंड क्वेश्चन 6 में आपको वापस से क्वेश्चन ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो दिस इज द एंटायर पेपर जो आपके सामने आएगा इस बार, कुछ इस तरीके का दिखेगा। आर वी प्रीटी मच क्लियर? 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाउ जो आपका पैसेज है वहां पर आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चंस करने हैं और ऐसे 20 नंबर है। देखो कायदे से व्हाट इज द मोस्ट बेसिक टाइमलाइन जो मैं आपको बोलता हूं, आप पहले ना अपने टाइम अलॉटमेंट को समझ लो। एक क्वेश्चन आप समझे, क्वेश्चन 1 में आप लोग सॉल्व करोगे 2-2 नंबर के 4-5 क्वेश्चन,
क्वेश्चन 1 के सेकंड में 4-5 क्वेश्चन, यानी कि टेक्निकली आप 8-9 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। सो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इन दिस टाइम इज कि ट्राई फिनिशिंग दिस अप इन 35 मिनट्स अराउंड, बस 35-40 के अंदर इसको खत्म करो। तो क्वेश्चन 1 को अपने को 35 मिनट से 40 मिनट्स हायर एंड पे खत्म करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जस्ट मिनट, हाँ जी, क्वेश्चन 2 में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो तकरीबन 20 मिनट के अंदर से 25 मिनट के अंदर इसको खत्म कर लो। सो अगर आप आपका फर्स्ट चंक, आपका फर्स्ट 1 आवर देखोगे तो उसमें क्वेश्चन 1-2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 में आपको फिर से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कीपिंग इट रियलिस्टिक। 25 to 30 मिनट्स आप यहां पर अप्रोच कर सकते हैं। 25 to 30 मिनट्स में ये खत्म हो जाना चाहिए आपका क्वेश्चन 3। देन यू हैव क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में 3 है, वापस से 25 से 30 मिनट आपके पास इधर है। एंड सेम क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6, यानी कि टेक्निकली मैंने आपके पेपर को 25 से 30 मिनट के ब्रैकेट के अंदर बांटा हुआ है, 25 से 30 मिनट के ब्रैकेट के अंदर बांटा हुआ है, ठीक है। आप यहां पर नोटिस करते चले, यहां पर नोटिस करते चले, यहां पर नोटिस करते चले। अगर आप इसका टोटल निकालोगे तो 35-25 ये 1 घंटा, 30-30 1 घंटा, 30-30 1 घंटा, 3 घंटा, ठीक है। सो अब मैंने आपके लिए क्या बहुत सिंपल कर दिया है कि आप एक क्वेश्चन में कितना टाइम स्पेंड करोगे। मतलब क्वेश्चन 3 के अंदर आपको मैंने 25-30 मिनट दिए। अब अगर एक क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग रहा हो, तुम ज्यादा लगाओ, दूसरे में टाइम बैलेंस करो, दूसरे में ज्यादा लग रहा हो, तीसरे में टाइम बैलेंस करो, बट तुमको उसके अंदर टाइम बैलेंस करना ही पड़ेगा। दिस इज द होल एंड सोल आइडिया। क्या यहां तक अपन सब साथ में है? तो आपको मैंने अपर कैप दे दिया है कि इतने में अपने को खत्म करना है, ठीक है, डन, श्योर। अब नेक्स्ट चीज, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कितने करने पड़ेंगे। क्वेश्चन 1 में आप तकरीबन मानिएगा आपको 8 से 9 क्वेश्चंस करने हैं, आपको 8 से 9 क्वेश्चंस करने होंगे। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, 3 क्वेश्चंस करने हैं। और क्वेश्चन 6 में आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये टिपिकली 20 नंबर के लिए आ जाता है आपके पास। ये 15, ये 15, ये 15, ये 15, 15 60 नंबर, ये 20 नंबर, तो ऑब्वियसली ये बन जाता है 20 मार्क्स का, ठीक है। हाँ जी सिमरजीत, सब बता रहा हूं, आप खाली मेरे साथ रहें तो सही। सो नाउ अगर आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो 3, 6, 9, 12, 12, 4, 16 बड़े क्वेश्चन हैं और छुटपुट क्वेश्चन हैं। आप इनको चलो 5 क्वेश्चन जितना मान लो, तो आप यहां पर जाओगे 16 4 5, तो 21-22 क्वेश्चन आपको करने हैं, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ टाइम यू हैव, दैट इज बाय फार 180 मिनट्स। तो अगर मैं 8 मिनट एक क्वेश्चन को देता हूं, अगर मैं 8 मिनट एक क्वेश्चन को देता हूं, तो मैं 170 मिनट में ये पेपर खत्म कर लूंगा। 1 मिनट का बफर मान लो, ठीक है। सो इंडिविजुअली एक क्वेश्चन आपका 8 मिनट के अंदर खत्म होना चाहिए। कुछ जल्दी भी हो जाते हैं, कुछ कम भी होते हैं, और सेगमेंट वाइज मैंने ऊपर आपको लिखवा के दे दिया, ठीक है। सना इसको कोई नहीं बता सकता 3-6 में क्या आता है। आर वी गुड टू गो? नाउ द एंटायर पेपर इज इन फ्रंट ऑफ यू। आर वी गुड टू स्टार्ट आवर आंसर राइटिंग? लेट्स स्टार्ट। एवरीथिंग सॉर्टेड, एवरीथिंग क्लियर? चलो लेट्स ट्राई टू फिनिश दिस पेपर। अच्छा, पेपर कैसे लिखना है, नंबरिंग कैसे करनी है, सब बताता हूं। बस अब तुम आराम से अपना रजिस्टर साथ में उठा लो, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन की अप्रोच समझो, एंड लेट्स गेट डन विद दिस क्रेजी सीरीज ऑफ योर्स, एंड आई रियली होप दैट दिस हेल्प्स यू, ठीक है। आपके याद रखना, मतलब बीइंग अ बिग ब्रदर टू यू, आई एम यूजिंग योर 3 आवर्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैंने बहुत सोच समझ के इस सीरीज को बनाया होगा। वॉट मोर यू कैन गेन देन दिस, इसका आंसर मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। तो मैंने बड़ी शिद्दत से बनाया है, थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ मेरे साथ साथ लिखना, तुम्हारी लिखने की स्पीड भी बढ़ जाएगी, थोड़ा सा पैटर्न भी समझ में आएगा, और यू नो रियली पास विद क्रेजी नंबर्स, क्रेजी मार्क्स, ठीक है। आ जाओ, बहुत ही बढ़िया, डन।
वरने का क्वेश्चन है पार्ट वाइज पेपर डिवाइडेड, नहीं बेटा, JIGL में पार्ट ए भी होता ही नहीं है, ठीक है। आई विल मेक श्योर दैट दिस बिकम्स वन ऑफ द बेस्ट सीरीज यू विल एवर 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 कम अक्रॉस, ठीक है। मैंने बहुत शिद्दत से डिजाइन की, बस बड़े शांति से बैठना, चैटिंग में नहीं, क्योंकि अब मैं स्क्रीन बड़ी कर रहा हूं, अब मैं आपके ऊपर फोकस नहीं करूंगा, अब मैं आपके साथ साथ बस जल्दी जल्दी लिखता जाऊंगा। भगवान करे आपकी हर इच्छा पूरी हो जो जायज हो, और मैं जितना कर सकूं, और भगवान मेरे रूप में भाई जितना तुम्हारे लिए करवा सके वो सब करवाए, मुझ में और भी कुछ बचा होगा तो मैं वो और भी कर दूंगा, तुम पास हो बस। आई रियली वॉन्ट यू टू सी दैट क्रेजी सक्सेस ऑफ योर्स, व्हाट यू केपेबल ऑफ। डन मेरे शेरों, चलिए शुरू करते हैं। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट मैं आवाज बढ़ा रहा हूं। एक मिनट दोस्तों, 3 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हाँ जी, अब मुझे बताइए क्या अब जब मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूं तब भी आवाज बहुत अच्छी आ रही है? मतलब अब आपको ऐसा लग रहा है कि आवाज एकदम क्लियर है? मैंने इसका भी डेसिबल बढ़ा दिया है। सही है एकदम दोस्तों। लेट्स स्टार्ट द स्टॉपवॉच। परफेक्ट, आवाज साफ है, हम भी साथ हैं। शुरू करते हैं। पेपर के ऊपर कभी भी कुछ मत लिखना। ओके, अभी आवाज साफ है ना दोस्तों? एकदम मस्त टकाटक। परफेक्ट 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 परफेक्ट। पेपर के ऊपर ओम नमः शिवाय, महाकाल की जय, जय श्री महाकाल, क्राइस्ट, अल्लाह, कुछ नहीं लिखना आपने, है ना? ये नॉट अलाउड होता है। हाँ जी, आपको भी साथ साथ में लिखना है, हम क्वेश्चन रीड करेंगे और आपको भी साथ साथ में आंसर्स लिखने हैं, आप बस देखकर अपने साथ लिखते चलो। लेट्स स्टार्ट। दिस इज जून 25। क्वेश्चन 1 है, सर ने बताया था पैसेज स्टाइल में होता है, ठीक है। पैसेज पहले रीड नहीं करेंगे, पहले हम पैसेज के नीचे की तरफ जाएंगे और हम पैसेज के क्वेश्चंस देख लेंगे। अगर एक बार पैसेज के क्वेश्चन समझ में आ गए तो उसके बाद तो मैं वापस से देख ही सकता हूँ कि मुझे क्या सॉल्व करना है। सो पहला क्वेश्चन है, इट इज अ यूनिवर्सल रूल इन ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस। चलो मैं पेपर रीड करते वक्त आपके साथ खुद को भी दिखाता रहता हूँ, उसमें कोई खासी दिक्कत नहीं है। आ जाओ। नहीं, सीसी कुछ नहीं लिखना, आ जाओ। इट्स ऑलमोस्ट यूनिवर्सल रूल इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूशंस where distribution of legislative power is provided that in the concurrent field the central law prevails, ठीक है, if it conflicts with a state law, ठीक है। सो इट सेज कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, बट अगर सेंटर ने लॉ बनाया तो इट प्रिवेल्स, विच इज राइट। हाउएवर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है इसका एक एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल। यस, इसका एक एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन है कि जब स्टेट ने अपने स्टेट के लिए कोई लॉ बनाया हो एंड उन्होंने उसको प्रेसिडेंट के लिए, मतलब पार्लियामेंट के पास रिजर्व करवाया हो कि क्या हम हमारे स्टेट के अंदर ये लॉ चला सकते हैं, बिकॉज इट डज नॉट कन्फ्लिक्ट द सेंट्रल लॉ, ये सिर्फ इसे बेटर वे में अप्रोच करता है। और अगर पार्लियामेंट अलाउ कर दे तो यस, आप ऐसा कर सकते हैं कि इवन सेंट्रल लॉ कुछ और चल रहा हो, आप अपने स्टेट में कोई दूसरा लॉ चला सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। नहीं युवराज, यहीं से स्टार्ट करो। नेक्स्ट अप, तो ये तो मेरे को कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर है। अ न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड एंड प्रिंटेड इन बैंगलोर। मेरे को इधर ही पता है यहां कौन सा वाला केस है, वो मेरे को स्टेट ऑफ बॉम्बे आरएमडीसी का केस था ये। इट कंटेन क्रॉसवर्ड पजल्स एंड एंगेज्ड इन प्राइस कंपटीशन। It had wide circulation in the state of Maharashtra, and most of its activities, such as the standing invitation, filing up of the forms, and payment of money, took place within that state. The state of Maharashtra imposed a tax on the newspaper. The publisher challenged the validity of the law on the ground that it was invalid so far as it covered a subject matter falling beyond the territory of that state. ठीक है,
because the paper was published in another state, discuss the validity of the action of the state of Maharashtra referring to the case of law. इसके अंदर टेरिटोरियल नेक्सस वाज डिस्कस्ड. टेरिटोरियल नेक्सस के लिए अपन लोगों ने बोला था कि भाई देखो, अगर आप कभी भी कोई एक ऐसा लॉ बनाते हो जो इंसिडेंटली आपके स्टेट से बाहर भी टच करता है, सो इट हैज टू बी सीन कि क्या रियल कनेक्शन है इसके पीछे, एंड इफ द पर्पस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट. तो अगर इंसिडेंटली ये बाहर भी टच करता है तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि टेरिटोरियल नेक्सस के तहत ये लॉ वैलिड होगा. तो मेरे को इसके लिए भी टेक्निकली ऊपर पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है. On a particular item included in state list, the state of Haryana and Rajasthan requested the parliament to make laws for them on that particular subject. Discuss the legality of this statement referring to the article of the Constitution of India. ठीक है, तो स्टेट लिस्ट के अंदर एक मैटर है, हरियाणा और राजस्थान ने पार्लियामेंट को बोला है. ओके, सो व्हेन टू और मोर स्टेट मेक अ रिक्वेस्ट टू द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट, राइट, दोनों को अपने अपने काउंसिल ऑफ स्टेट्स में एक रेजोल्यूशन पास करना होता है एंड दे कैन मेक अ रिक्वेस्ट टू द पार्लियामेंट. ये सेम प्रोविजन दूसरे स्टेट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, वैसे ही अपने काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करके असेंबली में. डिस्कस द लीगैलिटी ऑफ द स्टेटमेंट रेफरिंग टू द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. 252-53 में चल रहे थे अपन. व्हाट हैपेंस इफ एनी ऑफ द कंसेंटिंग स्टेट लेटर मेक्स अ लॉ ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. मैंने तुम जिस भी बैच में उसमें पढ़ाते पढ़ाते बोला था कि अगर कभी भी पार्लियामेंट आता तुम्हारे बुलाने पर है, आ तो तुम्हारे बुलाने पर जाएगा, पर जाएगा अपनी मर्जी से, यानी कि कोई भी अमेंडमेंट भी पार्लियामेंट ही कर सकता है, उसे रिपील भी पार्लियामेंट ही कर सकता है. जिन लोगों ने इसे अप्लाई किया या बाद में अप्लाई किया था वो उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते. इसके लिए भी मुझे पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है. Discuss the principle of harmonious construction in the interpretation of legislative list under Indian Constitution. अगर अलग अलग लिस्ट के अंदर कोई मैटर एक दूसरे से कंफ्लिक्ट करता है तो हम उसको इस तरीके से रीड करेंगे कि दोनों एक दूसरे से कंफ्लिक्ट ना हो, रादर एक दूसरे को हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट करे और आगे बढ़ जाए. बहुत ही बढ़िया. तो ये भी हो जाएगा मेरा. मतलब चारों क्वेश्चन रीड करने के लिए पैसेज इंस्टीट्यूट कितना शाना है साला, अपने को भोपू बना रहा है बैठ के. अपन बैठ के जबरदस्ती पूरा का पूरा पैसेज पढ़ रहे होते हैं. अगर पैसेज पहले स्टार्ट किया होता तो सो अक्कल का सौदा कहना मेरे गवारों. It is necessary or expedient in the national interest that Parliament should make a law on a matter enumerated in the state list. क्या पार्लियामेंट ऐसा कर सकता है? हाँ, अपन ने पढ़ा था कि 5 केसेस होते हैं जिसमें पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के अंदर आ सकता है. वो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, रिक्वेस्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फॉर द नेशनल इंटरेस्ट. सबसे पहला पॉइंट नेशनल इंटरेस्ट ही था, और लास्ट में था टू एनफोर्स एनी ट्रीटी, ये 5th वाला था. तो ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है. हाँ सर, हो जाएगा नेशनल इंटरेस्ट. मतलब टेक्निकली पांचों के पांचों क्वेश्चन के लिए ऊपर का पैसेज काम का ही नहीं, प्योरली वेस्ट है. इसमें कुछ पूछा ही नहीं ऊपर के पैसेज का, कोई रेफरेंस ही नहीं ऊपर के पैसेज के लिए. सर तो आप ये कह रहे हो कि फिर हमें ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं. देखो, कायदे से मैंने ऊपर का पैसेज पढ़ा भी हुआ है वैसे, पर ऊपर कुछ है नहीं, वो सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए. अब मैं आपको समझाता हूं पैसेज कब पढ़ना पड़ता है. आप इस क्वेश्चन में देखो, इसमें बोलते हैं डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ एक्स एज अ गारंटर. क्वेश्चन 2 है. अब जैसे ही तुमने बोल दिया डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ एक्स एज अ गारंटर, प्रॉब्लम क्या हुई? अब मुझे पता ही नहीं है केस के फैक्ट्स क्या है. जब तक मैं केस के फैक्ट्स नहीं पढ़ूंगा तब तक मुझे समझेगा ही नहीं कि यहाँ पर एक्स क्या कर रहा था, वाई क्या कर रहा था, श्याम कौन है, गोल्ड लीफ कौन है. जब तक मुझे यही नहीं समझेगा तो मैं आंसर कैसे लिखूंगा? सो टेक्निकली जब इनको तुमको पूरा पैसेज पढ़ाना होता है ना, तो वो ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे. क्या गोल्ड लीफ ऐसा कर सकता है, क्या यहां पर ऐसा हो सकता है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिसमें पैसेज रीड करना है. तो जहां पर अगर कोई फैक्ट्स की जरूरत ही नहीं है, जहां पर कोई क्वेश्चन इधर रिवॉल्व भी नहीं कर रहा, डू नॉट फॉल फॉर द ट्रैप. डू नॉट फॉल फॉर द ट्रैप. ठीक है. सो इस क्वेश्चन में अगर हमने ऊपर वाला पैसेज रीड नहीं भी किया होता तो चल जाता. दिस इज वेस्टिंग योर टाइम. ठीक है. इसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई देखो, असेंशियल फीचर ऑफ फेडरलिज्म है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने अपने लॉज पास कर सके. बिकॉज ऑफ असेंशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन डुअल पॉलिटी बनाता है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, जहां यूनियन के पास अपना पावर है, स्टेट के पास अपनी पेरीफेरी मतलब अपनी टेरिटरी का पावर है. ईच एंडाउड विद सोवरेन पावर्स, जो वो लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं. दैट वन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू अदर, कोई एक दूसरे से छोटा नहीं है, सब बराबरी की शक्ति रखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने 2 तरीके के डिस्ट्रीब्यूशंस बनाए, टेरिटरी के हिसाब से और सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से. एज रिगार्ड्स टेरिटरी,
Subject to the provision of this constitution, parliament may make a law for the whole or any part of the territory. 245 कहता है a law made by parliament shall not be deemed to be invalid on the ground कि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, मतलब आउटसाइड द टेरिटरी. ये अपन यूज करेंगे उसमें स्टेट ने कोई लॉ बनाया तो. आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव फॉलोड द कैनेडियन सिस्टम. एक लिस्ट कॉन्करेंट है, एक यूनियन है, एक स्टेट है. प्रेजेंटली आपके पास यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है. भाई देखो, लिस्ट 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, लिस्ट 2 में स्टेट गवर्नमेंट, लिस्ट 3 में दोनों पावर्स है. However, our constitution makes a few exceptions to the general rules by authorizing parliament to make a law even on a subject enumerated in the state list. As it is seen that the power between central and state are divided and they cannot make laws outside, it is also true that scientific division is not possible and question constantly arises कि क्या एक particular subject falls in the sphere of one or more of the other government. This duty in the फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो कल अगर कोई झगड़ा हुआ तो लिस्ट को इंटरप्रेट सुप्रीम कोर्ट करता है और बताता है किसके पास कितना पावर है. नाउ हाँ, अब एक बात बताओ, ये मैंने क्यों पढ़ा ना, ठीक है, मैंने ये तुम्हारे लिए क्यों पढ़ा, सिर्फ तुमको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि इसके अंदर कुछ नहीं था. ठीक है, अगर तुमको दिख रहा है यहां पर क्वेश्चंस में डायरेक्ट आंसर्स है, पैसेज के ऊपर ज्यादा नाचने की जरूरत नहीं है. अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा कि अरे शिट इसको कैसे लिखेंगे, तो पैसेज देख सकते हो, वरना पैसेज मत देखना. चलो करे श्री गणेश, मैंने मेरे सामने क्वेश्चन ओपन करके रखे हुए हैं. लेट्स स्टार्ट. यस, इसे कहते हैं टाइम वेस्ट करना. इंस्टीट्यूट तुम्हारा टाइम भी वेस्ट करेगा, देखेंगे कि कैसे तुम इसे बचाते हो. चलो मेरे साथ लिखना. This is your question 1. Question 1 A. ठीक है, चलो फोकस करना आराम से, जल्दी से. तो पहला क्वेश्चन था आपका that it's a universal rule in our constitution where distribution of legislative power is provided that in concurrent field the central law prevails if in conflict with the state law. However, our constitution recognizes an exception to the general rule. कभी भी कोई भी आंसर लिखते हो, always go ahead with IRAC pattern. Always go ahead with IRAC pattern, है ना? Cool people, let's start the paper now and we're not stopping now from here. फट 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 लिखते चलना मेरे साथ. First, the general rule is that the law made by the central government. भाई लोग प्लीज 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 इसमें इतना टाइम मत वेस्ट करो, मेरे साथ जल्दी जल्दी लिखते चलो, चैटिंग में इतना टाइम मत वेस्ट करो प्लीज. And Mahendra voice is so little, the English is wrong, Mahendra. नस रितिका तुम देखती चलो ना बस. चलो now the general rule is that the law made by the central government prevails over the law
made by the state government on any matter in the concurrent list. The general rule is that the law made by the central government prevails over the law made by the state government on any matter in the concurrent list. However, to the above general rule, there is an exception which states that if the law made by the state is repugnant to any provision of central law but the same is reserved for the consideration of parliament, that is president, and has received assent then the law of state prevails. Yes, my love. The first answer is done. Did you get my point? So there is no necessary आपको एक ड्रामा करना हो as per the relevant provision और article of constitution. आप ऐसे भी लिख सकते हो. 2 नंबर का क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है. The general rule is that the law made by the central government prevails over the law made by the state government on any matter in any concurrent list. However, to the above general rule, there is an exception which states that if the law made by the state is repugnant to any provision of central law, but the same is reserved for the consideration of parliament, that is president, and has received assent, then the law of the state prevails. जल्दी बोलो, क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ जी. क्वेश्चन 2 हो गया आपका. ठीक है. तो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडीसी आएगा. ठीक, डन. Perfect. We're writing the part B now. हाँ जी, इसका आगे आ गया सेकेंड. Newspaper was published and printed. 2 नंबर का क्वेश्चन है. Contained crossword puzzles and had a wide circulation state of Maharashtra and most of the activities. ठीक है, पूरा का पूरा ही फैक्ट्स है. डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द एक्शन ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र रेफरिंग टू द केस लॉ. केस लॉ बोला है तो केस लॉ तो बताना ही पड़ेगा. वी कांट रियली चेंज इट.
under the Constitution, a state legislature may make a law that has extra territorial jurisdiction, provided it has sufficient territorial nexus. ठीक है, ये आपका मतलब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट था. एक सेकंड, आई जस्ट पुट अप क्वेश्चन नंबर 2 हियर. फर्स्ट पॉइंट जी. नेक्स्ट अप, in other words, if there is sufficient nexus between, बस मैंने खाली स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ही पूछा ना. If there is sufficient nexus between the law made, if there is a sufficient nexus between the law made and the operation, महाराष्ट्र और बैंगलोर है ना, and the operation, which falls beyond the territory, then the law so made shall be valid. बोलो दोस्तों, यहां तक की बात समझ में आई आपको जल्दी से? पक्का 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 एकदम तगड़ा क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट अप. तीसरा, इन वर्सेस RMDC. ऐड आ रहा है क्या? ऐड कुछ नहीं था, चलो. The court stated that two conditions needs to be fulfilled. हाँ जी, two condition needs to be fulfilled. हाँ जी, अब देखो, जब आप सब पॉइंट लिखते हो ना, आप सब पॉइंट अंदर की तरफ लिख सकते हो, मेन पॉइंट बाहर की तरफ लिखो. रिद्धि 2 नंबर का क्वेश्चन है, पागल हो गए क्या? हाँ जी, A B ये आप अंदर लिख सकते हो. नहीं, हाईलाइट अपन बाद में करेंगे अभिषेक, पहले अपन एक बार खाली लिखना सीख लेते हैं. सेकंड पेपर में तुमको हाईलाइटिंग सिखाऊंगा. हाँ जी, ए, इसमें क्या था? द कनेक्शन मस्ट बी रियल. हाँ जी, पहला क्या था? द कनेक्शन मस्ट बी रियल. हाँ जी, और दूसरा क्या हो गया? द लाइबिलिटी sought to be imposed must be pertinent
to the object. बोलो, क्लियर है? क्लियर है? सेकंड आंसर, सो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो लॉ बना सकता है दैट हैज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन प्रोवाइडेड इट हैज सफिशिएंट टेरिटोरियल नेक्सस. In other words, if there is sufficient nexus between the law made by and the operation which falls beyond the territory, then the law so made shall be valid. So in the state of Bombay versus RMDC, दो conditions बोली गई थी. The connection must be real and the liability sought to be imposed. एक चीज छोटी सी और इसके अंदर ऐड करनी है अपने को, वो क्या है? So in the given case, the law, अब देखो क्वेश्चन में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का दिया हुआ था. The law made बाय महाराष्ट्र. अब मैं से इस क्वेश्चन से उठा रहा हूं इसको, ठीक है? महाराष्ट्र इज वैलिड एज द मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिविटीज took place in Maharashtra there is a sufficient territorial nexus. हमेशा याद रखना, अगर उन लोगों ने तुमको जस्टिफाई करने के लिए बोला है तो आपको उसका एंड में कंक्लूजन देना ही होगा. अब मेरे इस पॉइंट में ये क्वेश्चन अच्छा था, इन लोगों ने 2 नंबर में शिफ्ट किया. क्वेश्चन तो 5 मार्कर क्वेश्चन था, ठीक है? मेरे इस पूरे आंसर में आप अगर क्या नहीं लिखते चलता, इन अदर वर्ड्स, आपको इन अदर वर्ड्स नहीं लिखना मत लिखो क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन था, नहीं भी लिखा तो चल जाएगा, ठीक है? बट इससे ज्यादा का डिस्काउंट अलाउड नहीं है. आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना ही था, थर्ड पॉइंट लिखना ही था, कंक्लूजन लिखना ही था. सो आप अपने सेकंड वाले पॉइंट के ऊपर एक छोटू सा स्टार मार्क करके रख सकते हो कि ये अगर आपने नहीं भी लिखा होता तो चलता, और अगर ये 5 नंबर का होता तब भी यही आंसर था, बस ये सेकंड पॉइंट ऐड करना था, बस. इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है ना, ठीक है? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन. On a particular item included in the state list, the Haryana Rajasthan, अच्छा ठीक है, हरियाणा और राजस्थान का क्वेश्चन आ गया. And requested the parliament to make laws for them on a particular subject, discuss the legality of the statement referring to the article of the constitution which happens if any of the concerning state makes a law on that particular subject. ये अपन थर्ड वाला लिख रहे हैं ना? हाँ जी, थर्ड वाला. एक मिनट से मुझे क्वेश्चन वापस देखना था. Requested to make laws for them on the particular subject, legality of the statement, what happens when the consenting state later makes a law. चलो कर सकते हो पेज चेंज, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, मैं पेन पतला कर देता हूँ. दिस इज फाइन. हाँ जी, तीसरा. अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट on a matter in the state list
in the following cases. In national interest, on a request by two or more states, during proclamation of emergency, D. Breakdown of constitutional machinery, in the given case, the state of Haryana and Rajasthan can make a request to the parliament by passing a resolution in their state legislature if such a request is made. If such a request is made, if such a request is made, then the parliament can legislate. Then the parliament can legislate on that particular matter for those states which requested. The laws so made can also be adopted by other states by passing a similar resolution. However, once a law is made by parliament, then only they have the power to amend or repeal it. So any contrary law
made by the state shall be invalid. बोलो, डन है? समझा? जल्दी 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 बताओ। डन? लिख ले मेरे साथ सर। ठीक है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है तो बहुत फुद्दू है। Discuss the principle of harmonious construction under the Indian Constitution. Under the Indian Constitution, many times, under the Indian Constitution, many times the entries in different lists conflicts with each other, and in that case the task of judiciary is to interpret the same in such a manner that it does not contradict each other. The rule of harmonious construction, the rule of harmonious construction requires the interpretation to be in such a manner that fair meaning be given to both the entries, to both the entries, both the entries, so that no entry becomes null and void. Done. बोलो, क्लियर है शेरो? दैट्स इट, इतना ही काम था। अभिडान 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 चलो, let's zoom in. Is it okay if it is necessary or expedient in the national interest that Parliament should make a law on a matter enumerated in the state list? Can Parliament do so? Yes, they can do so. 2/3 supported resolution आया तो 1 साल के लिए रेजोल्यूशन आता है, 6 महीने में खत्म हो जाएगा उसके बाद।
Let's start. Parliament can make a law with respect to any matter in the state list, with respect to any matter in the state list, in national interest, provided the same is approved in the Council of States by a resolution supported by two-third majority. The resolution stays in force for a period of 1 year and can be extended further by another such resolution. The law so made by the, I hope तुम सब भी लिख रहे हो, हाँ कर सकते हो. The law so made by the Parliament comes to an end at the expiry of 6 months from the end of resolution. From the end of resolution. Unless the same is stop. बस इतना ही था इसका, और तो कुछ नहीं. ठीक है, लो भाई, क्या बोलते हैं, जमा क्या? दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन. भाई साहब, तुम लिख लिख के तुम्हारे हाथ नहीं दुखते क्या? आज मेरे समझ में आया, मेरे छोटे छोरियों की तकलीफ है. मेरे मासूम इतनी बुरी तरीके से ट्रॉमेटाइज होते हैं. लिख लिया, अच्छे से समझ में आया. अच्छा, क्वेश्चन 2 तो अपने को करने नहीं है. क्वेश्चन 2 सो गए, है ना? क्वेश्चन 2 सो गए, ये अपने को नहीं करना. सो गए, डिलीट हो गया अपना. नाउ यू आर रीचिंग टू क्वेश्चन 2. है ना? चलो, अच्छा अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्वेश्चन है. डन. पधारो मेरे शेरों. आनंद could not clear his civil service interview, yet he falsely pretends that he has cleared it, and he intentionally deceived Param, dishonestly induced him to provide goods on credit,
डिस्पाइट हैविंग नो इंटेंशन टू पे फॉर देम, डिस्कस द ऑफेंस कमिटेड बाय आनंद अंडर बीएनएस। कौन सा ऑफेंस है ये? कौन सा ऑफेंस है ये? अगर केस का याद ना है तो अच्छा, आपके दो चार क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। व्हाट आई थिंक, जब मैं आपके आंसर लिख रहा था, आई वांटेड टू गिव यू मोर होलिस्टिक थिंग। क्वेश्चन नंबर 3 में .1 आप चाहें तो ओमिट कर सकते थे, यानी कि ये जो मैंने नेशनल इंटरेस्ट वाला बताया, बाकी आप एज इट इज लिखना था अपने को, ये तो बिल्कुल सेम सेम ही लिखना था। और ऊपर वाले पॉइंट मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, बस इतना ही एक्स्ट्रा, बाकी इतना लिखना ही। अच्छा, तुम्हारी गलत फहमी है, तुमको लगता है कि अरे बहुत ही छोटा है तो बिल्कुल ही 2 लाइन में लेके निकल जाएंगे, होगा कुछ नहीं, नंबर मिलते नहीं है तुमको। उसके बाद कभी नोटिस करके देख लो, जय जेल में इसलिए तुमको नंबर नहीं आते। जय जेल में लैंग्वेज ऐड करनी पड़ती है, आप उनके मॉडल आंसर उठा के देख लो, बड़े बड़े छाप छाप के लंबे लंबे आंसर देते हैं वो, तो इतना लंबा लंबा आंसर लिखते हैं, अपन एकदम ही फुद्दू फुद्दू लिख के आते हैं, नंबर नहीं आते। सो हल्के से आंसर डिटेल लिखो, ऐसे मत करो कि बिल्कुल ही तुम आंसर उड़ा दो। ठीक है, इतना लिखना पड़ता है, ऐसे नहीं होता, इससे कम नहीं करना भाई। ए चीटिंग बाय पर्सोनेशन गलत है शेष, बाकी सब लोग एकदम सही है, चीटिंग बिल्कुल सही। द केसेस ऑफ चीटिंग नॉट चीटिंग बाय पर्सोनेशन, यस यू गाइस आर करेक्ट, है ना, ये चीटिंग का केस है। ओके नेक्स्ट अप सर, अगर हाँ, अगर आपने कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट दिए होते, फॉर्ज चीज दी होती, तो हम फॉर्जरी लगाते, ये चीटिंग थी ना, इसने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया। पर्सोनेशन कब होता है दोस्त? चीटिंग बाय पर्सोनेशन होता है जब आप खुद को रेजोनेट करो एज समवन एल्स। ठीक है, आ जाओ, बहुत ही बढ़िया, ये गए ये गए ये गए ये गए। अच्छा, किसी को केस याद नहीं आया तो आप केस के जगह पे एज पर द रेलेवेंट केस लिख सकते हैं। सर इज इट ओके टू नॉट लीव लाइंस पॉइंट्स एज यू हैव डन? सी टेक्निकली मेरी राइटिंग बहुत बड़ी और गंदी है, इसकी वजह से मैं क्लैरिटी रखता हूं। ठीक है, मेरी राइटिंग बहुत बड़ी और गंदी है, इसी वजह से मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट्स बना के लिखता हूं, थोड़ा सा गैप क्रिएट करता हूं, बट इन एनी अदर केस इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। अगर आपको लगता है आपकी राइटिंग क्लियर है, आप पॉइंट्स मत छोड़िए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। हेलो, Anand could not clear a similar degree at falsely pretends he had. Cool. Let us ease the on my table. He could not clear the several. The given case. This is how I want. हाँ, see. एक मिनट, देखो अब मैं तुमको इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करने के लिए बोल रहा हूं। इसमें अब देखो, दो चीजें हो सकती है, या तो आपको सेक्शन आता होगा, ये चीटिंग का केस है 318, पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको केस ना आए, तो आप लिख सकते हैं द गिवन केस रिलेट्स टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 318 दैट इज चीटिंग, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो दिस गिवन केस कम्स अंडर चीटिंग ऑफ बीएनएस एंड यू कैन स्टार्ट योर आंसर विद दिस। ठीक है, तो सेक्शन नहीं आता हो तो जबरदस्ती गलत मत लिख कर आना, मुद्दा सिर्फ इतना है, सेक्शन लिखने से नंबर जल्दी आते हैं, गलत लिखने से पक्का जाते हैं, नहीं लिखने से जाएंगे नहीं नंबर। ठीक है, अपन इसके पॉइंट्स को, इसके इंट्रोडक्शन को, अब जो मैं सेकंड वाला आंसर लिखाऊंगा ना जिसमें सेक्शन होगा, उसमें अपन सेक्शन मेंशन नहीं करेंगे, विदाउट सेक्शन लिखेंगे एज पर द रेलेवेंट केस जैसे। ठीक है ना, नई लेवल ऑफ लेजेंड्स, दिस इज चीट। द गिवन केस रिलेट्स टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 318 ऑफ बीएनएस दैट इज चीटिंग। इट स्टेट्स, इट स्टेट्स, जिसने मुझसे ये बीएनएस पढ़ा होगा उसको चीटिंग की डेफिनेशन एज इट इज याद होगी, दैट whoever
by deceiving any person dishonestly induces the person so deceived to deliver any property or to do or not to do something or to do or not to do something which he would have not done, which he would have not done if he was not so deceived. If he was not so deceived. एक सेकंड इसमें एक और चीज and such act or omission is likely to cause damage to that person, his body, his reputation. आई एम बिलीविंग कि ये आपको बहुत अच्छे से याद था दोस्तों। आंसर राइटिंग के साथ साथ याद भी करते चलने का, बिना देखे भी इसको याद कर सकते हैं अपन लोग। सर क्या था? इट स्टेट्स दैट हुएवर बाय डिसीविंग एनी पर्सन dishonestly induces such person to do or not to do something or to deliver any property which that person would have not done had it been he was not so deceived, and such kind of deception has caused loss to his body, to his mind, to his reputation. सिंपल, याद होगी डेफिनेशन, है ना? अगर किसी को नहीं भी आती थी तो इसी बहाने याद भी करते चलो। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहें तो अब इस केस को उठा सकते हैं, ठीक है? द मेन ingredients the main ingredients of cheating are, जब आपको इसके इंग्रेडिएंट्स आते हैं फट फट से यहाँ पर इंग्रेडिएंट ऐड कर दो। देयर इज deception by a person, which wrongfully induces the other person to deliver any property such act causes or is, आप इसको नेक्स्ट पेज पे लिखना, इधर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपके लिए ऐसे ही लिख रहा हूँ। causes or is likely to cause damage to the person or his property। हो गया, बस पहुंच गए अपन एंड पे, अब बस कंक्लूजन करना है, आ गया। in the given case in the given case Mr. Anand falsely represented that he is a
civil servant, thereby inducing the other party, to sell goods on credit. This amounts to cheating. बोलो, अगर इसी में इसने खुद को कोई बैंकर दिखाया होता या फिर खुद को किसी से मैच करवा रहा होता कि मैं तो ये आदमी हूं, तो फिर ये बन जाता चीटिंग बाय पर्सोनेशन। बोलो जल्दी से, क्या ये अपने को टकाटक एकदम क्लियर है? मेरे हिसाब से मेरी राइटिंग बड़ी और मैंने पेज बहुत जूम इन कर रखा है। आपका तो एक ही पेज में बन गया होगा आंसर 5 नंबर के लिए पूरा का पूरा। अगर आपको बाइफर समझ में आया हो तो मैं 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर में भेदभाव नहीं करता। मैं अपना पूरा कंटेंट डिलीवर करके ही आता हूं। कोई बात नहीं, 2 मिनट ज्यादा लगे तो लगे, पर मैं तो अपना पूरा पेपर लिखता हूं। ठीक है। Ram filed a suit for recovery of certain sum against Raj, who was a minor. ठीक है, राज एक माइनर है, सीबीसी का केस है। लेटर एन एक्स पार्टी डिक्री वाज पास्ड अगेंस्ट राज माइनर के खिलाफ डिक्री भी आ गई। इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री द हाउस ऑफ राज माइनर का घर वॉज सोल्ड टू प्रभु, माइनर का घर क्यों बेचा, एंड सेल सर्टिफिकेट वॉज ऑल्सो इशूड इन फेवर ऑफ प्रभु। ठीक है। हाउएवर राज कंटिन्यूड लिविंग इन द हाउस एंड लेटर ऑन डाइड, बच्चा अभी भी रहता ही रहा पर मर गया। लिविंग नो लीगल एयर, तो प्रॉपर्टी हो गई एस्चीट, पास टू द स्टेट। प्रभु ने पोजेशन के लिए फाइल किया है केस, डिस्कस द लीगैलिटी ऑफ प्रभुज क्लेम ऑफ द पोजेशन ऑफ फालतू। ठीक है, पूरा क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन गलत इन द सेंस कि इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, बहुत ही बढ़िया लेवल ऑफ मेरे भाई। हाँ जी। सो राम फाइल्ड अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ सर्टेन सम अगेंस्ट राज हु इज अ माइनर। देखो यहीं पर गलती है, गलती यहीं पर है। ठीक है, टेक्निकली गलती यहीं पर है। माइनर के केस में केस करने के लिए आपके पास गार्डियन होना चाहिए। अब अगर आप माइनर पे केस कर रहे हो तो या तो माइनर खुद कोर्ट को अप्लाई करे या सामने से प्लेंटिव को अप्लाई करना पड़ता है कि भाई सामने माइनर को एक गार्डियन दो। और जब तक गार्डियन यानी कि वो जो अपना नेक्स्ट फ्रेंड होता है तब तक वो अपॉइंट ना हो, तब तक कोई भी डिग्री पास नहीं की जा सकती। और अगर इस रूल के कॉन्ट्रावेंशन में कोर्ट ने डिग्री पास करी तो दिस डिग्री बिकम्स नल एंड वॉइड। ऐसी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती है। सो सिंस यहां पर कहीं पर भी जिक्र नहीं है ऑफ गार्डियन अपॉइंटेड फॉर माइनर, ये जो डिग्री कोर्ट के पास हुई नल एंड वॉइड है, मतलब प्रभु कभी मालिक बना ही नहीं था। सिंस प्रभु कभी मालिक बना ही नहीं था तो आज भी उसका क्लेम फॉर पोजेशन सही नहीं होगा। ये गवर्नमेंट के पास ही जाने वाली प्रॉपर्टी एस्चीट के अंदर लिखेंगे। दिस इज टू बी। अब मैं इसमें कुछ सेक्शन ऑर्डर क्वेश्चन लिखने लगा। अब मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया द गिवन केस रिलेट्स टू द प्रोविजन ऑफ द सूट्स, प्रोविजन ऑफ सूट्स बाय और अगेंस्ट अ माइनर, बाय और अगेंस्ट अ माइनर in which the CPC provides that any suit on behalf of a minor
can only be filed by his next friend and against a minor So the given case relates to the provision of suits by or against a minor in which the CBC provides that any suit on behalf of a minor can only be filed by his next friend and against a minor in the name of his guardian. In the name of his guardian. Next point. Where the defendant is a minor, where the defendant is a minor and the court then the court must appoint a guardian upon the request of the minor or the plaintiff. When the defendant is a minor, the court must appoint a guardian upon the request by the minor or the plaintiff. If there is no guardian with the minor. Failing this, the decree passed in any suit. Failing this, the decree passed in any suit against a minor is null and in the given case, a decree was passed in contravention of the above provision against a minor. वो लड्डू समझ में आ रहा है ना? In the given case, a decree was passed in contravention of the above provision against a minor, thereby selling his property. Is a nullity and has no effect. So the claim of possession by Mr. Prabhu है ना, is not sustainable and the property belongs
टू द गवर्नमेंट। खत्म भाई, मेरे बच्चे कितनी मेहनत करते हैं यार, हाथ नहीं दुख गया तुम्हारे लिख लिख के? अभी डन? आया क्वेश्चन समझ में? ठीक है, आ जाओ, सी करेंगे। Aman contracts to sell to Bharat 50 bighas of land situated in his village for 1 lakh. It, however, turned out to be only 25 bighas of land belonging to Aman. Yet 25 bighas are substantial part of the contract. The general principle under the specific relief act not applicable. वैसे बाय द वे, ये तुम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा भी हुआ है, राइट? तुमको याद होगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मैंने तुमको पहले ही पढ़ा दिया था। अगर वो बोलेगा तो परफॉर्म करेंगे, बट देन उसको पूरा कॉन्सेंट्रेशन देना पड़ेगा अगर सामने वाला कॉम्पनसेशन नहीं मांगा तो। बट वी डोंट नीड दिस। आज क्वेश्चन 3। Rakesh entered into a bond with a company to serve for a period of 5 years. As per the terms of the bond, if Rakesh leaves the job earlier and joins a competitor within 5 years, he would be liable to pay damage. After receiving necessary training, Rakesh left the job within the Sabas Rakesh Sabas and he joined a competitor. The former employer filed a suit for damages against him. In this argument filed, is it valid under the Indian Contract Act 1872? Yes, this is a valid contention. I hope तुमको इसका प्रोविजन याद होगा। ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन बैन होता है, जबकि अगर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए टू सपोर्ट आर क्लेम, उस क्लेम को अपन वैलिड मान सकते हैं। यहाँ पर कॉम्पिटिटर ने तुम्हारी ट्रेनिंग पे पैसा लगाया था और उसने तुमको बोला कि मेरे मतलब कंपनी ने तुम्हारे ऊपर पैसा लगाया था और बोला कहीं और काम मत करना, देन यू हैव टू पे डैमेजेस। इसमें कुछ नहीं हो सकता। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये बिल्कुल वैलिड क्लेम है। ठीक है, सही है। आई अंडरस्टैंड मेरे शेरों, बट लिखना तो है ही ना। चलो, ठीक है, इसका सेक्शन तो मेरे को भी याद नहीं है, अपन फट 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 लिखेंगे। दिस इज क्वेश्चन 3 और 3 का अपन ए लिख रहे हैं। एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एनी अग्रीमेंट by which any person is restrained, any person, any agreement by which any person is restrained from exercising his lawful profession is to that extent void. Is to that extent. Here, further, the court in a case clarified इधर जो केस था ना, वो था निरंजन गोलीकर वर्सेस द सेंचुरी स्पिनिंग मिल्स। आई होप तुमको ये याद होगा। बट देन मैंने जान पूछ के यहाँ पर केस मेंशन नहीं किया। क्यों? हर चीज में क्यों? कभी कभार केस नहीं भी याद आता है, आप इंसान हो। सो हेयर फर्दर द कोर्ट इन अ केस क्लैरिफाइड, और अपन वो केस का वर्डिक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है ना। सो कभी अगर केस याद नहीं है तो मरण करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, भूल सकते हो, इंसान हो तुम। हेयर फर्दर द कोर्ट इन अ केस क्लैरिफाइड
that an agreement through which an agreement through which a person binds himself a person binds himself during the term of his employment during the terms of his employment and not take up service anywhere else is not an absolute restraint and can be valid. So the law recognizes the law recognizes two forms of restraint, which is considered bad in law and is void. B. If it is to protect a legitimate interest. हो गया, कंक्लूजन करेंगे. जमा गया, कंक्लूड कर दे जल्दी से. In the given case, the restraint by the company was to protect its own interest as they were investing in the training of Rakesh के क्वेश्चन है वो? In the given case, the restraint by the company was to protect its own interests as they were investing in the training of Mr. Rakesh, and it is a partial restraint that stops him from taking employment with its competitors for 5 years. In the given case, the restraint by the company was to protect its own interest
as they were investing in the training of Mr. Rakesh, and it is a partial restraint which stops him from taking employment with its comparative for 5 years. Hence, it is valid. खत्म. बोलो मेरे शेरों, जमा के. Neelam had a property situated in Prayagraj. She was in urgent need of money for the business purpose and therefore approached the creditor, showed her documents and borrowed money. Not applicable for us. Registration Act का क्वेश्चन है. Types of mortgage. ये types of mortgage में this is called deposit mortgage by deposit of title deed. टेक्निकली ये तब वैलिड होता इसमें ना डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड यानी इक्विटेबल मॉर्गेज में अगर आपका सिटी नोटिफाइड है कि यहाँ पर डिपॉजिट बाय टाइटल डीड हो सकता है तो ये वैलिड होता है. अगर नहीं नोटिफाइड है तो नहीं होता. लखनऊ मेरे हिसाब से नहीं है नोटिफाइड, सो इसमें द मॉर्गेज वुड हैव नॉट बीन वैलिड. बट अगेन ये हमारे काम का नहीं क्योंकि आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है ना. चलो नरेश रख लेते इसका नाम. नीरेश ड्रॉज अ चेक ऑफ 50,000 ऑन हिज ओन अकाउंट पेबल टू गुकेश. गुकेश भाई को जिताना है चाहे कुछ भी हो जाए. गुकेश भाई प्यार है, बट ही ओनली हैज 20,000 इन हिज अकाउंट. शाबाश नीरेश. गुकेश प्रेजेंट्स द सेम टू द बैंक विद इन टाइम अलाउड. ठीक है, वैसे बाय द वे कितना टाइम अलाउड होता है? 3 मंथ्स अलाउड होता है. चेक गॉट बाउंस ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड इन नीरेश अकाउंट. शाबाश. डिस्कस द रेमेडी अवेलेबल टू गुकेश. ये 138 का क्वेश्चन है, आई होप यू रिमेंबर. हाँ अभिषेक करते हैं मेरे शेर. Under the NI, and what are the requirements which have to be complied with 138 of this act before initiating an action? देखो 138 यानी कि चेक बाउंस के केस में पहली बात द पेमेंट शुड बी मेड टू पे सम डेट. ठीक है. सेकंड द चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन टाइम. नेक्स्ट अप आपको उसको 30 दिन का टाइम देना मतलब 30 दिन के अंदर आपको उसको इंटीमेट करना होता है कि चेक बाउंस हो गया और आपको उसको 15 दिन देने पड़ते हैं टू पे. और अगर ये 45 दिन के अंदर भी वो काम नहीं करता है देन यू हैव ऑल द राइट टू फाइल अ केस अंडर 138. हाँ सर आप बिल्कुल चलता है. देखो तुमको अभी तक एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि मैं 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर देख के आंसर नहीं लिखता. मेरे को मेरा टाइम अलॉटमेंट पता है, मेरे को पता है कि मेरा पेपर इतनी देर में खत्म करना है, इतने क्वेश्चंस हुए हैं. अगर कहीं मैं फंसूंगा तो मैं हल्का सा आंसर शॉर्ट अप करूंगा अगर मुझे जरूरत लगेगी. बट मैं अपना पूरा प्रोविजन थ्रो करके आता हूं. मैं कभी भी प्रोविजन आधा अधूरा नहीं करता. मैंने ना, और यहां बैठे मेरे जितने भी रेगुलर क्लास के बच्चे होंगे वो आपसे लिख कर दे सकते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने उनको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा उन्होंने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा उन लोगों ने मेरे से. मैं हर बार बोलता हूं कि आंसर डिटेल्ड लिखो. मेरे इसमें मैं मेरे बच्चों को सालों से एक ही चीज बोलता आया हूं कि मेरे इसमें डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. आप डिटेल्ड आंसर ही लिखोगे, फालतू का काम करना ही मत. ठीक है ना. नंबर देख के बनी. हाँ इंट्रोडक्शन थोड़ा छोटा बड़ा कर दिया चलता है. जहां ऊपर 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे जहां छोटा बड़ा हो सकता था हमने स्टार लगाया कि ये नहीं भी लिखते तो चलता. मैं मेरी तरफ से बता दिया. ठीक है पधारो. आ जाओ मेरे शेरों. 3 2 1. नीरेश और मुकेश. अच्छा अभी तक आपको एक चीज समझ में आई ना. अभी तक आपको एक चीज समझ में आई ना. व्हाट एम आई डूइंग इज पहले मैं प्रोविजन लिखता हूं. इसको कहता हूं मैं आईरैक. पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूं हल्का सा, फिर मैं प्रोविजन लिखता हूं, फिर जो केस होता है ना उसको और प्रोविजन को कंपेयर करता हूं और एंड में कंक्लूड कर देता हूं. यही एक पैटर्न होता है जिससे भर भर के नंबर आएंगे. इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद रीजनिंग मतलब आपका प्रोविजन, फिर एनालिसिस यानी कि क्वेश्चन को प्रोविजन से कंपेयर करना और लास्ट में कंक्लूड कर दो. सर इसकी पनिशमेंट कितनी है? चेक बाउंस में 2 साल की इंप्रिजनमेंट और जो चेक का अमाउंट है उसकी डबल, ट्वाइस आपकी पनिशमेंट हो जाएगी. ठीक है.
सर JIGL SBL की टेंशन बहुत कम कर दी. आई रियली होप कि मैं और कम कर सकूं. आपकी पूरी मदद करूंगा. लेट मी बी द कैप्टन अमेरिका फॉर यू. Just a minute. As per section 138 of the Negotiable Instrument Act 1881, as per section 138 of the Negotiable Instrument Act 1881, where a check is drawn by a person for payment of any debt or part of debt, for payment of debt or part of debt to another person, and the same is returned unpaid because of insufficient funds, funds or any other such reason. देखो यहाँ पर मैं चाहूँ ना तो आगे मैं और एनी अदर सच रीजन की जगह दूसरा वाला लिख सकता था, जिसके अंदर बोला जाता है कि आपने जो चेक अमाउंट बनाया है वो आपकी ड्राइंग कैपेसिटी के ऊपर है, आपकी बैंक में इतना एक बार में चेक ऑनर ही नहीं होता, वो हो सकता था. पर मेरे केस को इसकी जरूरत नहीं है. सो आई एम कीपिंग इट प्रीटी सिंपल दैट अ चेक इज ड्रॉन बाय अ पर्सन फॉर पेमेंट ऑफ एनी डेट और पार्ट ऑफ द डेट टू अनदर पर्सन एंड द सेम इज रिटर्न अनपेड बिकॉज इनसफिशिएंट फंड्स द अकाउंट में और एनी अदर सच सिमिलर रीजन. ठीक है. एनी अदर सच सिमिलर रीजन. Then the offense of section 138 is committed. ठीक है. Punishment for the above offense is punishment for the above offense is imprisonment up to 2 years or fine which may extend up to twice the
amount of check. However, the following conditions must be complied. A. The check was duly presented. The check was duly presented, that is within 3 months. B. Notice of dishonor must be given to the drawer within 30 days of receipt of information by him from the bank from the bank regarding the return of check. C. The drawer fails to make payment within 15 days of the receipt of notice. अब बस कंक्लूजन लिख लो. So, in the present case, Mr. Gukesh can have remedy under section 138 provided he duly presents the check within 3 months. Present the check within 3 months. Gives notice of dishonor to drawer within 30 days, and if the payment is not done
within the next 15 days. बोलो मेरे शुरू, समझ में आया? इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, लेट मी सी। थैंक यू सो मच साची सर। टू डिस्चार्ज एनी लाइबिलिटी भी लिख सकते हैं ना मैम, डेट और डिस्चार्ज एनी लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी में आई थिंक मेरे को डेट ज्यादा अच्छा लगता है, बट ठीक है, ऐसे कोई बहुत दिक्कत नहीं है। सर आपने एनआई एक्ट लिखा है, क्या हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं? फुल फॉर्म लिखो, ज्यादा अच्छा रहता है। मैं बस ऐसे ही मतलब लिख दिया होगा, बट फुल फॉर्म इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड एज अगेंस्ट शॉर्ट फॉर्म। ठीक है सर, क्वेश्चन पे मार्किंग कर सकते हैं ना, क्योंकि बोर्ड में अलाउड नहीं होता था। लिखना मत कुछ, डन है। एनी ऑफिशियली कम टू क्वेश्चन 4। अच्छा, अब क्वेश्चन 4 में मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। So A is accused of forging B's signature on a gift deed. The prosecution relies on the opinion of handwriting expert who confirms that the signature is forged. Discuss the opinion of handwriting expert. बहुत ही सिंपल है, ये अपने को बन जाएगा। Raj has been wrongfully detained in custody by Yogesh, the police officer. What remedy is available with Raj's family in such case of Indian? Habeas corpus. Soham, age 62, was working as an IC, Information Commissioner. Okay, RTI का क्वेश्चन है। In the between of his tenure, after serving 1 year as an information commissioner, he was appointed as a CIC. IC can be appointed as CIC, right? Discuss in detail whether he can be appointed as a chief information commissioner. Yes, he can be appointed. एक CIC वापस से अपॉइंट नहीं हो सकता, पर एक IC तो CIC बन ही सकता है। एंड एक्सप्लेन द टर्म ऑफ ऑफिस। क्यूमुलेटिवली 5 साल से ज्यादा नहीं और एज 65 से ज्यादा नहीं। इसके केस में 1 साल ऑलरेडी कर चुका है, तो 4 साल और है इसके पास, और एज 62 है, तो अब सिर्फ 2 ही साल बचे हैं इसके पास, क्योंकि 1 साल बाद 63 का तो हो ही गया होगा, तो 2 साल। तीनों क्वेश्चन बन रहे हैं मेरे हिसाब से, तो कायदे से मेरे तीनों क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त कंट्रोल में। मैं तो यही वाला अटेम्प्ट करूंगा। नीचे ऑल्टरनेट में, द कोर्ट हैव ऑलवेज इंसिस्टेड दैट एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज मस्ट फॉलो मिनिमम फेयर प्रोसीजर, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। हाउएवर, व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन द राइट टू फेयर हियरिंग एंड द रूल अगेंस्ट बायस बी लॉफुली एक्सक्लूडेड? एक्सेप्शन टू नेचुरल जस्टिस पूछ रहा है, स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन याद आ रहा है क्या? व्हेन द लॉ स्पेसिफिकली एक्सक्लूड्स इट, वो वाला है। ठीक है, तो ये भी मेरे को अच्छे से आता है वैसे। व्हाट पावर डज द कलेक्टर हैव, स्टैम्प डिलीट हो चुका है। A party may before or during arbitral proceeding or at any time after the making of arbitral award but before its enforcement of 36 apply to the court for interim measures. जब जब पढ़ाया होगा ना interim measures, तुमको मैंने 50 बार बोला होगा कि याद करना, interim measures जरूर आने का चांस होता है। ठीक है, ठीक है। सो आई थिंक मेरा 4 ऊपर वाला ज्यादा अच्छा है, ना कि 4A वाला ज्यादा अच्छा है। सो आई विल ऑप्ट क्वेश्चन 4। आई थिंक मेरे सारे बच्चे ने 4 ही ऑप्ट किया होगा जून 25 में। ठीक है, चलो। सो ए इज अक्यूज्ड, हाँ जी। तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, वैसे देखो ये ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स का है कि देखो, अब अगर मान लीजिए कभी भी ओपिनियन, वैसे जनरल रूल ये कहता है हियर से इज नो ओपिनियन एंड ओपिनियन ऑफ अ पर्सन डज नॉट मैटर, बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट या फिर एनीवन हु इज अवेयर ऑफ माय सिग्नेचर ऑफ माय हैंडराइटिंग, लाइक यू, तुमको तुम्हारे सामने 10 कॉपीज रख दे, तुम एक मिनट बता दोगे इसमें से मेरी राइटिंग कौन सी है, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ माई राइटिंग। तो ऐसे केस में हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स या फिर लाइक यू, दोज हु आर यू नो accompanied with the knowledge of my handwriting can testify and give their opinion, और आपका ओपिनियन रेलेवेंट भी माना जाएगा। दैट इज द आंसर। बस इतना सही, इसका आंसर तो बहुत ही छोटू बनेगा आपका, है ना? चलो लिखेंगे। यस तुषार, फ्रेश पेज से स्टार्ट करो। इसमें ए है ना, ए इज अक्यूज्ड ऑफ फॉर्जिंग बी सिग्नेचर ऑन अ गिफ्ट डीड ऑफ प्रॉपर्टी। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट पे प्रोसिक्यूशन रिलाई कर रहा है, हु कंफर्म्स की सिग्नेचर फॉल्स है। बताओ कि भाई ओपिनियन की हैंडराइटिंग, ठीक है, ओपिनियन ऑफ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट कितनी रेलेवेंट होती है? ठीक है।
general rule under BSA is that evidence in all cases must be direct. That is, if it can be heard, the person giving witness should have heard it. If it can be seen, the person should have seen it. So, hearsay evidence is no evidence, as well as opinion of any person is not relevant in the court. However, to this rule, opinion of an expert is an exception. So, if the court has to form an opinion, so if the court has to form an opinion as to whether any document was written or signed by a person, then the opinion of an expert or any person acquainted with the handwriting of the person becomes relevant. Becomes relevant. So, in the given case, the prosecution can rely on the opinion of handwriting expert
and the same is relevant though it may not be conclusive. ओह क्या आंसर है, मजा। बोलो मेरे शेरो, लिख लिया? लिख लिया? अच्छा, यहां पर कितने लोग हैं जो बकायदा मेरे साथ पूरे पूरे आंसर लिख रहे हैं, खाली स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे बैठ के? कितने लोग हैं जो खाली स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे? नेक्स्ट वाले पेपर में मैं क्वेश्चन जंबलिंग सिखाऊंगा आपको। मतलब अपन पहले क्वेश्चन 3 करेंगे, बाद में क्वेश्चन 2 करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 1 करेंगे और मार्किंग करेंगे। क्या करेंगे? मार्किंग करेंगे। अभी आज सिर्फ तुमको प्रेजेंटेशन स्किल सिखाए, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना सिखाया, पैनिक नहीं करना ये सिखाया, इसके ऊपर काम किया था आज अपन ने। लिख रहे हो सब? बहुत ही बढ़िया है। वर्ड टू वर्ड लिखा है। कॉन्फिडेंस आ रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है बेटू? वर्थ इट? सो फार सो गुड? हाथ दुख रहे पर बेटा इसी से आदत पड़ेगी ना, वरना अपनी आदत कैसे पड़ेगी? इतना बड़ा पेपर सॉल्व कैसे करेंगे उस टाइम पे? नहीं, फोटो नहीं चाहिए, बस आप लिख रहे हैं ना, प्रभु और आप एक दूसरे को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच महेंद्र, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। परफेक्ट। होगा होगा सिमरन, 3 पेपर मैं कराऊंगा, उसके बाद तो तुमको खुद ही लिखना है ना। मजा आ रहा है? चलो मजे को और बढ़ाएंगे आगे। क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया, बी वाला है। Raj has been wrongfully detained in custody of Mr. Yogesh, a police officer. What remedies available to Raj family? अरे हेबियस कॉर्पस है, डायरेक्ट छापने का सारा। फट 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 झट पट फटाफट, लक्ष्मी जी घर के अंदर चलो, बीवी को मारो टूटेगा नहीं। In the given case, Mr. Raj, Mr. Raj, राजी है ना? has been wrongfully detained by a police officer, and in such cases the constitution provides a remedy in the form of writ of habeas corpus. Second, the writ literally means to have the
and is available to any person who has been wrongfully detained, who has been wrongfully detained, who has been wrongfully detained without any justification. The person himself or any of his family member or friend may approach to the High Court under Article 226 or Supreme Court under Article 32. The court issues a rule nisi, that is to show cause why the person should not be released. This allows the court to know. This allows the courts to know the reason behind the arrest and to set the person free if he has been wrongfully detained. If he's been wrongfully detained. एक ही सेकेंड. लास्ट पॉइंट कंक्लूड करना पड़ेगा. In the given case, if Mr. Raj has been wrongfully detained by कौन है, किसने अरेस्ट किया था? Mr. Raj has been wrongfully by Yogesh. If the wrongfully detained by Mr. Yogesh, Yogesh then the court can order his release under the writ of habeas corpus. आप बस habeas corpus एक सेकंड लिखिए करें. चलो, डन. आ रही है, ऑन द वे. बोलो मेरे शुरू.
क्लियर है? 4B is done. Sohan Singh, age 62, was working as an IC in the middle of his tenure. After serving 1 year as an information commissioner, he was appointed as the chief information commissioner. Whether he can be appointed as the CIC and explain the terms of the office of chief information commissioner under the Right to Information Act 2005. ठीक है. सुना एंड में बताता हूँ. अभी एक बार अपना फ्लो बना हुआ ना, अच्छा, फिर बाद में बताता हूँ. मस्त. This is 4C. Under the RTI Act 2005, under the RTI Act 2005, Information Commission is formed to receive complaints under the Act for non-appointment of PIO, wrong or no response by PIO, extra or wrong fees charged to the PIO. The Central Information Commission is formed with Chief Information Commissioner and Central Information Commissioners to perform the above work. To perform the above work. Next one. Following are the rules for the term of office. A.
Chief Information Commissioner can hold office for any term as may be prescribed provided he cannot hold office. He cannot hold office after he has attained the age of 65. Chief Information Commissioner cannot be reappointed Information Commissioner can also be appointed for any tenure, but he cannot, hold the office after he has attained the age of 65. Information Commissioner can be appointed as a Chief Information Commissioner provided his aggregate tenure cannot exceed 5 years or the age of 65 years. Whichever is earlier. Time to conclude. Point. In the given case, Mr. Sohan Singh can be appointed as Chief Information Commissioner provided aggregate tenure
cannot exceed 5 years or age of 65, whichever is earlier. डन मेरे शेरों. लिख लिया. ये हो गए. पूरे नहीं करने. 5 पे आ गए. डिस्कस द इफेक्ट ऑफ रिपील. सेक्शन 6 रिपील याद है क्या? The BNS which came into 1st July 2024 repealed the IPC. यही एग्जांपल दिया है मैंने तुमको. As the primary criminal law in India, what is the consequence of offense under IPC before 1st July 2024 से पहले वालों के ऊपर BNS लागू नहीं होता. उनके ऊपर वही चलता रहेगा. Repeal not to affect any previous operation of law, any act which was done prior, any fine which was imposed on a crime prior, वो ही लगेगा. सब कुछ पहले जैसा ही होगा. ठीक है. तो ये आंसर लिखना है अभी. What is meant by summon under BNS? Provisional service of summon to corporate body. ठीक है. CS को भी एड्रेस कर सकते हैं, पार्टनर्स को भी एड्रेस कर सकते हैं. सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू देयर रजिस्टर्ड ऑफिस. A person was accused of theft involving stolen property valued at less than 5,000 rupees. He was a first-time offender and the property was recovered. Discuss the punishment prescribed for such an offense under BNS. What other offenses are covered under this type of punishment? ठीक है. Community service. याद है क्या? कम्युनिटी सर्विस. डेफोमेशन भी कभी कभार कम्युनिटी सर्विस में आ सकता है. फर्स्ट टाइम ऑफेंस 5,000 तक का अगर प्रॉपर्टी वापस दे दी है तो कम्युनिटी सर्विस दे सकते हैं आपको. बहुत ही बढ़िया शेरो. ठीक है. चलो लिखेंगे फिर गपेंगे आएंगे वापस से. जनरल क्लॉज. ये तो बहुत ही छोटा आंसर है. 5A. फाइव फर्स्ट. As per section 6 of the General Clauses Act 1897, where any central act repeals any enactment then unless a different intention appears, the repeal shall not
revive any law not in force at the time of repeal affect the previous operation of the enactment affect any right or liability incurred under the repealed enactment affect any penalty or punishment for any offense committed during the repealed enactment. Second part. So BNS 2023 which has replaced the IPC 1860 but the BNS 23 which is replaced by IPC 1860 cannot affect any case or act committed during the time when IPC was in force. During the time when IPC was in force, hence, for those offences, IPC will apply as if it was not so repealed. वैसे वैसे मैं एक लाइन और लिखना चाहता था that no one has a vested right in procedural law. No one has a vested right in procedural law. तो उन्होंने BNS पूछा, ठीक है, प्रोसीजर अगर चेंज होता तो अपने को करना पड़ता, बट ठीक है,
दिस इज इट। बोलो मेरे शेरों, समझ में आया क्या? What is meant by summon under the BNS S? Discuss the provision again. ठीक है। समन क्या होता है भैया? एक रिटन नोटिस सेंड बाय द कोर्ट, duly signed, sealed by the court at the registered office of the person. It can be delivered by post, or a police officer or an officer of a court can come to your house. If you are not there, आपके घर के किसी भी अडल्ट तो हट गया, आपके घर अडल्ट तो है, मेल हट गया, आपके घर पे किसी भी अडल्ट मेंबर को ये नोटिस देके चले जाएंगे। एंड इन केस ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी, समन आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में भेज दिया जाएगा, एड्रेस टू द कंपनी सेक्रेटरी और टू द डायरेक्टर, और इन केस ऑफ फर्म टू द पार्टनर। क्या बोलती पब्लिक? आर वी टुगेदर? यार ये जनरल क्लॉजेस का है, इंटरप्रिटेशन और जनरल क्लॉजेस मर्ज करके दिया हुआ है। जनरल क्लॉजेस अलग एक्ट है, इट्स नॉट इंटरप्रिटेशन, है ना? आप फीमेल को भी आप नोटिस दे सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। चला, लेट्स स्टार्ट, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? पेपर के बीच में थोड़ा ब्रेक है क्या? नहीं, ब्रेक तो नहीं है वैसे, पर दे दे एक सेकेंड, इसको हाई करा दो। बच्चों 1 मिनट लास्ट। तू पूरा पेपर खराब कर देगी। देखो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको शीट चाहिए होती है, आपको सूसू आ जाती है, तो आपका टाइम वेस्ट होता है। सो दिस इज द टाइम यू वेस्ट योर टाइम। आप अपनी रिफिल भरते हैं, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो इधर उधर देखते हैं कि इसने कौन सी क्लास से पढ़ा होगा, साला ये तो बोला था ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, या ऐसा अगर आपके साथ जीवन में कभी भी होता है, दिस इज दैट टाइम वेस्ट राइट नाउ। हाँ हाँ, गाली किसको दे रही है रे? पेपर सॉल्व कर रहे हैं, बीच में आके बैठ गई है। चल हाई करके जा। अगर वो नहीं मिल रहा हो ट्विंकल तो कॉन्स्पिशियस प्लेस पे चिपका सकते हैं, दैट इज व्हेन द समन फेल्स, है ना? जस्ट अ मिनट पिल्लू, जस्ट अ मिनट पिल्लू। पिल्लू एक बार सबको हंसा दो, कैसे कैसे करती, कैसे करती, कैसे करती के? टिंग 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 टिंग। है मेरी बेटी इतनी बड़ी कैसे हो गई रे तू? ये क्या ताकत लगा रही है मधु? ले 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 स्क्वायर, हम लोग थोड़ा सा टाइम बाउंड चल रहे, पूरा कैलकुलेशन हिल जाएगा। था। अच्छा ताली बजा दो, एक बार क्लैप कर दो सबके लिए। ताली बजा दे, ताली बजा दे। ताली कैसे बजाती है? अरे बाप के लिए ताली बजा दे भाई, बाप लिख लिख के थक गया अभी तक। नॉट इंटरेस्टेड? ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, हम तुम्हारे अप्रिसिएशन के लिए नहीं बैठे हैं, चलो भाग जाओ। बाय छोटू, जा टाटा। हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैंने देखो आज प्यार नहीं किया, करता हूँ, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ प्यार ही करता हूँ तेरे को। हाँ जी, टाइम वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करते, चलो ठीक है। नाउ शी इज गॉन एंड वी गुड टू गो, लेट्स स्टार्ट। समन 5B। समन एक सेकंड ना, एवरी समन से स्टार्ट करो। समन is a notice sent by the competent court
to any relevant party to present himself or bring anything in his custody in front of the court. In front of the under the BNS S under the BNSS every summon issued every summon issued ओह लिख रहे हो ना मेरे साथ ऐसा नहीं टाइम पास में चले गए लास्ट ईयर हाँ जी every summon issued by the every summon issued by the court must be a in writing sealed by the court इसमें सील एंड स्टैम्प कर दो लिख रहा हूँ ना बहुत ही बढ़िया लिखो 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 in writing sealed stamped by the court every summon shall be by a police officer or an officer of court and if the person to be summoned cannot be found then the same can be to any adult member of the house by leaving duplicate. Next up, service of summon to corporate bodies. Service of summon to corporate bodies can be done by serving it upon the secretary or director of the corporation by sending the same
by registered post to the registered office of the corporation. In case of summon to forms, it can be it can be addressed to the partner and be sent upon the place of business. बोलो शेरो, कहां तक पहुंच गए? सेट है? ठीक है, कम्युनिटी सर्विस, ये छोटा क्वेश्चन है. A person who is accused of theft involving stolen property valued at less than 5,000. He was a first-time offender and the property was recovered. Discuss the punishment prescribed for such an offence under BNS. ठीक. Let's start. The BNS 2023 has recognized a new form of punishment wherein the offender performs unpaid work for the benefit of the community. This is also called rehabilitative justice system, where the aim is restorative justice. Where the aim is restorative justice.
under the following cases, community service can be awarded. Misconduct by a drunk person, defamation, petty theft, where value does not exceed 5,000, as the first offense of the person. एक और लिखिए बेटा. Attempt to commit suicide to compel any public authority in the given case. The person can be community service as a punishment, as the value of theft is under 5,000, the property is restored, and the person committed the offense the first time. सप्लीमेंट. हाँ, मेरे को भी सप्लीमेंट लगेगा भाई. सप्लीमेंट में है भी टाइम. अच्छा, अगर आप यहां पर आ जाए ना, वैसे एक्चुअली जसप्रीत हैज टेकन अ गुड स्टैंड. एग्जामिनेशन शीट 29 पेजेस पे होती है, आप बताओ ना. 27-28 बजे यहाँ खत्म हो जाता है, राइट. तो अगर आप ये सेकंड लास्ट पेज पे आ जाओ तो यहाँ पर आप सप्लीमेंट मांग लेना, ठीक है. जब तक वहां आएंगे साइंस में, तब तक तुम अपना एक आंसर और निपटा लोगे. सो दिस इज द राइट टाइम. वेरी गुड भैया, बहुत ही बढ़िया बताया. एक सेकेंड, बाय द वे, मुझे पता था कि हमें सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी. एक मिनट. तो तुम जानते नहीं हो मैंने प्लानिंग किस हद तक करी है. तो मैंने सप्लीमेंट शीट भी बनवा के रखी है जो 4 पेजेस की होती है. सो या, वी डू हैव इट, डोंट वरी, यू विल गेट योर सप्लीमेंट्स.
Okay, fifth is done and you're reaching to the last question. Okay, and you're reaching to the last question. Question 6. You're well time bound. आप देखें तो 4:55 हो रहा है एंड 5:15 तक का टाइम होता है, तो आपके पास तकरीबन 20 मिनट बचे हैं और अपन ने इन बिटवीन ऑब्वियसली 30 मिनट तो बातें करी है, कुछ भी किया है, तो रैशनली और साथ में एक्सप्लेन किया है, ये सब किया है, इतना नहीं होता. सो वी हैव मेड आवर आंसर्स वेल विद इन टाइम जस्ट टू प्रूव इट टू यू दैट इवन अगर आप थोड़े से डिटेल्ड आंसर भी लिखते हैं, यू कैन. टाइम अप कैसे हुआ है? 5:15 तक होता है ना भाई पेपर, और हाफ आवर बाकी है अभी भी. अपनी बात आ जाओ भाई. ओके, सिक्स्थ है चॉइस वाला. हाँ, तो कुछ क्वेश्चन स्किप किए तो पहले 30 मिनट बातें भी तो करी अपन ने. स्टार्टिंग का 30 मिनट बात करी ना भाई. कौन सा धर्म ईमान वाला पहले 30 मिनट बातें करता है? और ये जो बीच बीच में तुमको एक्सप्लेन किया है, शेरो ठीक हो, लासा से मिलवा दो, ये कर दो, वो सब देख लो. आधा घंटा है ना अपने पास, विच इज राइट. आपने 30 मिनट बचाए. मैं आप देख लो, स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था लास्ट क्वेश्चन के लिए 25 से 30 मिनट बचना चाहिए. चुप रहो, आ जाओ. ये स्पीड चाहिए अपने को. 6. अनिल इंस्पेक्ट्स अ हॉट वाटर बॉटल एट द केमिस्ट शॉप. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है. And inquires where it will be standing boiling water. Anil was told this that it will stand hot water but not boiling water. Then he buys it. The moment Anil puts hot water into the bottle, it bursts. Jela pichoda. Discuss the help of relevant provision whether Anil has any remedy. Yes, obviously he has it. एक सेकंड पर क्वेश्चन करना ही नहीं है. सोगा का क्वेश्चन है ये. सोगा का क्वेश्चन ये नहीं करना है. मर्चेंटेबिलिटी का क्वेश्चन है. Amir, the owner of a boat, contracts with Bhavesh to take a cargo of jute to Aligarh for sale that place. Starting on a specified day, the boat, owing to some unfortunate reason, could not start at the time appointed, hence the arrival of the cargo at Aligarh is delayed beyond the specified contracted time. After the date before the arrival of the cargo, the price of the jute falls. Discuss in detail the remedy. Ordinary damages मांग सकता है Contract Act. Ahmad Rahim Samir, Secular India, were joint owners of a truck and possession of the said truck was with Rahim. Sudeep purchased the truck from Rahim without दूसरों के approval, whether it has a good title. सोगा का क्वेश्चन है. Although he has a good title, इसे कहते हैं सेल बाय अ नॉन ओनर. सेल बाय अ नॉन ओनर में सेल बाय अ नॉन ओनर बाय द पर्सन हु इज अ जॉइंट ओनर हैज पोजेशन कैन सेल इट. तो ये वैलिड सेल होती, पर ये अपने को करने की जरूरत नहीं है. तो फिर अपन ये वाला क्वेश्चन नहीं करते हैं. 2 क्वेश्चन तो है ही नहीं यार, तो अपन ऑप्शनल क्वेश्चन करते हैं. ठीक है. हाँ जी. हम कहाँ थे? ठीक है. सोगा. तो अपन 6A वाला कर लेते हैं. 6A में रॉस्को पाउंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट याद है क्या? वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट. बहुत ही बढ़िया. डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉस्ट. सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट. An information provider is a person who provides information to a body corporate under these rules has certain rights over sensitive personal information. Such information cannot be collected without a provider's consent. What restrictions do the SPDI के rules है? Consent लेना है, कितने साल सेव करना है, archival policy, right to opt out. बोलो क्वेश्चन है. Discuss the ground on which a party against whom a foreign award is invoked may oppose its enforcement. अवार्ड बाहर सुपरसीड कर दिया गया है. आर्बिट्रेशन का नोटिस सही से नहीं दिया गया था. आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट हुआ प्रॉपर्ली अपॉइंट नहीं हुआ था. पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है. ये ग्राउंड्स है ऑफ अपोजिंग दिस. हाँ जी. आर वी ऑल टुगेदर? लाइव पिल्लू एवरीवन लिखेंगे लास्ट. एक कुछ नहीं होता. क्वेश्चन 6 कोई हार्ड नहीं होता. थक जाते हो तुम यहां तक आते आते. कर ले.
अच्छा, लास्ट आंसर कर रहे हैं, इसके बाद हमारे आंसर राइटिंग कंप्लीट हो जाएगी ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद मैं वीडियो 15 मिनट लाइव छोड़ूंगा, उसमें अब तुम्हारा काम है सालों मेरे हाथ की मावेन कर दी, शानदार सा कमेंट लिख देना, और उसके बाद अपन इस वीडियो को प्राइवेट कर देंगे एंड देन दिस विल गो पब्लिक अगेन इन दिसंबर। तो अब ये तुम्हारा काम है इसके बाद, ठीक है ना, कसम है तुमको। अरे टाइम का प्रेशर नहीं होता रे, एक आध क्वेश्चन तुमको नहीं आता इधर उधर, टाइम बचता है, टू बी प्रिसाइज मिलता है तुमको टाइम। एक आध में छोटा आंसर लिखते हो, एक में कुछ होता है, ये अपन बहुत ज्यादा डिटेल्ड आंसर दिख रहे हो, तुम बिल्कुल सही जा रहे हो। अननेसेसरी खुद को मत डराओ एक दूसरे को। सोशल इंक्वायरी बिटवीन कंपेयरिंग इंटरेस्ट इन साइड, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट। एक सेकंड क्वेश्चन निकाल लूं मैं। सिक्स फट 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 फटाफट। Roscoe Pound gave the social engineering theory wherein he drew a similarity between the task of a lawyer and an engineer. The aim of this theory was to build an efficient society, where the satisfaction of maximum wants is achieved with minimum friction. He classified these wants into three types of interests: which are as follows. A. Individual interest.
these are claims from the standpoint of individuals' life and concern, like interest in domestic relations, comma, interest of personality, which includes his freedom of will, which includes his freedom of will, honor, reputation. ये इसका पहला बन गया इंडिविजुअल इंटरेस्ट. ये मैंने आपको आई थिंक आंसर्स में भी लिखाया हुआ है आपके. B is, if anyone is not written, keep it like this. B is public interest. These are claims from the standpoint. These are claims from the standpoint of political life, like state as a juristic person, and state as a guardian of social interest. Last. Social interest. These are claims from the standpoint of social life. These are claims from the standpoint of social life, which includes social interest in general security, social interest in general morals, like laws dealing with prostitution and gambling. ये पागल है क्या पवन? चटक गया क्या साले? खैर किसी की तो याद नहीं है तो किसी की भी लिख के आ सकते हैं क्या? हाँ जी, दिस डन. डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज. पधारो.
Oops, supplement time. It's 6A2. As per section 5 of the Limitation Act 1963, Roshan Raj has been blocked from the page. He is disturbing. इसके पीछे वो भीम सिंह नेक्स्ट जाएंगे. As per section 5 of the Limitation Act 1963, a court may allow extended period in cases. A court may allow extended period in cases where sufficient cause is shown by the applicant or by the applicant. This section does not apply in case of suits because the limitation period is generally in years. In years. It is the discretion of the court. पेन की रिफिल खत्म हो रही है 10%. It is the discretion of the court as to whether it wants to condone the delay or not.
Okay, wrong practice of the High Court which misled the applicant. Advocate. The time during which the party was ill. Ailment of father, where the applicant was taking care of the same. बहुत ही बढ़िया, खूब है केसेस. Lastly, the law of limitation has made this concept subjective and it is an individualistic test. Done. जल्दी बताओ, समझा मेरे शेरों? Sir, how to improve writing practice, even learning practice, like you know the even answer. ऐसे हमें भी सारे क्वेश्चन बनने चाहिए, तो क्या करना चाहिए हमें? एक अपनी तरह से आंसर आना चाहिए. देखो, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन कहाँ जा रहा है, 1 मिनट प्रोविजन रिकॉल कर लो एंड देन स्टार्ट. हर बार इंट्रोडक्शन लिखना है, एनालिसिस करना है और कंक्लूड करना है. यू विल रियलाइज दैट इट्स द सिमिलर पैटर्न बीइंग फॉलोड अगेन एंड अगेन. सिमिलर पैटर्न बीइंग फॉलोड. आंसर राइटिंग इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग. सिर्फ आप अगर इसे कंटिन्यूस बेसिस पे करते रहो ना, तो आप चल जाएंगे. सर, अगर एक्ट के नाम के आगे ईयर नहीं, कुछ नहीं होता. कोई बात नहीं, सारे एक्ट के ईयर याद नहीं होते, कोई बात नहीं, चलता है. एक सेकंड पे, हाँ मैंने कर दिया था. नहीं, ठीक है, ऑलमोस्ट देयर, वी आर ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट देयर. हमने अपना बी लिख लिया, ऑलमोस्ट हो गया. ठीक है, अपने को करना है अब 6A3. 3 क्या है? ठीक है, एसपीडीआई. डन. होता है, अगली बार आ जाएगा टॉर्स में. क्या, चलो. ठीक. An information provider is a person who provides information to a body corporate including sensitive personal data. This information
cannot be collected. This information cannot be collected except by the consent of the information provider. Following are the SPDI rules. Has to be privacy policy has to be provided on the website of the body corporate. B. Consent of the information provider is to be obtained before obtaining any sensitive personal data. The corporate should only the corporate should only collect data for any lawful and necessary purpose. The fact that data of individual is being collected as well as the purpose is to be shown. The data should only be retained till the purpose is achieved. The information provider has a right to opt out and withdraw the consent, and the same should be provided to him. And the same should be provided to him. Sorry. All the data collected
should be protected against unauthorized use. Adam. डन मेरे शुरू जमा मेरी स्टॉप वॉच में 2 hour 53 minutes से लिख रहे हैं अपन 2 hour 53 minutes आई थिंक अगर आप में से भी किसी ने स्टार्ट किया होगा तो सेम ही आ रहा होगा एक और सप्लीमेंट लगेगा ठीक लास्ट क्वेश्चन क्या है द ग्राउंड्स ऑन व्हिच अ पार्टी अगेंस्ट whom a foreign arbiter is allowed may oppose the enforcement of 48 ठीक है ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन ऑफ फॉरेन अवार्ड मैम 2 मिनट और लिखने दो मैम बस लास्ट आंसर है मैम लास्ट 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 प्लीज प्लीज मैं बर्बाद हो जाऊंगा मैडम प्लीज 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 मैम बस 1 मिनट मैम आप बस वहां से कॉपी मैडम आप बस वहां से कॉपी लेके आइए बस मैं आ रहा हूँ मैम चलो चलो जल्दी लिख लो सालों छीन जाएगी वो मैं नहीं रोक पाऊंगा उसे हाँ ओके चलो हे भगवान अरे मैडम पेपर ही छीन लो तुम अपनी लिखा रहा मेरे से अरे कौन सा उड़ता तीर ले ली सीधा सीधा जा रहा था मैं अपने घर बढ़िया संडे को सोता पिक्चर देखता पता नहीं क्या मस्ती चढ़ी मुझे कुछ नहीं बच्चा चलो लिखते हैं इसमें क्या हो गया ये तो मेरा काम है हाँ चल आ जाओ 48 कुछ as per section 48 of the Arbitration and Conciliation Act enforcement of foreign award may be refused on the following grounds. On the following grounds. A. The parties were under some incapacity. The parties were under some incapacity or the arbitration agreement was not valid. B. No proper notice of appointment of no proper appointment of
arbitrator was given. The arbitration award deals with any matter not referred for arbitration. The arbitral tribunal's composition was not in line with the agreement. The award has been set aside in the foreign country. एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें. Apart from this, the Indian court may also deny execution if the award is against public policy of India or the subject matter is not capable of being settled through arbitration. खत्म. Shut up. So we done. We're done. We spent around 3 hours 2 minutes to write everything, and सारे answers complete. पूरा paper solved. You know that how to appear this. Now you know. मैं आपको एनालिसिस शीट में सब बता दूंगा क्या आएगा. Now you know how to appear the paper. Now you know how to write this paper. Temperament, how to read the questions. Obviously हम इसके और पेपर सॉल्व करेंगे. ठीक है भीम, तेरे सामने तो काम कर रहा हूं मेरे भाई. तू बता दे ये सब काम छोड़ के तेरे लिए डेकोरेशन के काम करूं. दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, और मैं तेरे को बैठ के खाली सेम चीज लिख कर दूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वन. दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट टाइम ऑफ अ सेशन. 15 मिनट लाइव है. ठीक है 15 मिनट लाइव है. तुम जो भी सना, तुम पीछे करके जो तुमको लिखना है वो लिख लेना, और बाकी सब लोग अब एक अच्छा सा कमेंट ड्रॉप कर दोगे प्लीज. आई थिंक आई पुट अप ऑल माई हार्ट इन दिस. जितना अच्छे से हम लिख सकते थे लिखा. छोटी मोटी गलतियां मुझसे भी हुई होंगी, सबसे होती है, कोई बात नहीं. तो बहुत दिल से किया है, तो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट, लाइक, और जो तुमको इस वीडियो के साथ अच्छा लगे वो कर दो प्लीज. ठीक है. नेक्स्ट सेशन वापस से 3 दिन बाद है. डन. Cool. Thank you so much for joining me this session. This is Chirag signing off. Have a great one. Jai Hind, Jai Siya Ram. Bye 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 bye.